Good evening, everyone. Subha Sandhya. ମୁଁ Amlan Anshumat ସାହୁ MBBS ଛାତ୍ର। ତ ଆଜି ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଆମର ନିଟ୍ ପାଇଁ ବାୟୋଲୋଜିର ସେସନ ଯୋଉଟା ଆମେ ଚାପ୍ଟର କରୁଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସେଲ୍ ଡିଜିଜ। ବାୟୋଲୋଜିର ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର। ଆଉ ଏଇଟା ବେସିକାଲି because এটা human health বিষয়ের চ্যাপ্টার, তো এটা বহুত ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার বিকজ আমি এমবিবিএস অ্যাসপিরেন্ট। ওকে, তো আজ আমি কন্টিনিউ করছিলে ଯୋଉଟା ଆମେ ଛାଡ଼ିବା। ଓକେ, ସେଇଠି ଯୋଉଟା ଆମେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସେଇଠୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆକ୍ଟିଭ ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟାସିଭ ଇମ୍ୟୁନିଟି। ତ କାଲି ଆମେ କଣ ଦେଖିଥିଲେ? କାଲି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଆଡାପ୍ଟିଭ ଇମ୍ୟୁନିଟି କଣ ଆଉ ମାନେ ଆମର ଏକ୍ୱାର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି କଣ ଆଉ ଇନେଟ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି କଣ, ରାଇଟ୍? କାଲି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଇନେଟ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଆଉ ଏକ୍ୱାର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ କଣ ଆଉ ତାଙ୍କର କଣ କଣ ଫିଚର୍ସ ଆଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଯିବା active and passive immunity. Okay. active immunity कौन आउ passive immunity कौन? both active और passive immunity होचंदी classification of acquired immunity. Okay, active and passive immunity दीड़ा जगह हमारा classification of acquired immunity, innate immunity नहीं। तो हमें immunity को basically केमिति classify करिवा innate and acquired रे, तापर again acquired immunity को हमें two types से classify करि परिवा, active immunity and passive immunity. Both active immunity and passive immunity are again two types of classification as natural active, artificial active, natural passive and artificial passive immunity. Okay, so when a host is exposed to antigens which may be in the form of living or dead microbes or other proteins, antibodies are produced in the host body type. तो एटा हमें जानचे कि जेतेबेले गोटे होस्ट को किछि एंटीजन रो एक्सपोजर हुए से एंटीजन टा को प्रकार एंटीजन हे पारे, सेटा गोटे लिविंग माइक्रोब हे पारे, सेटा गोटे डेड बा एसेंचुएटेड माइक्रोब हे पारे, जोटा हमें वैक्सीनेशन रे दियंत, वैक्सीनेशन रे दियंती। वैक्सीनेशन रे कोन दिया जाय? वैक्सीन्स कोन? वैक्सीन्स आर ईदर लिविंग और माने they are either dead microbes or partially deactivated microbes. Okay, माने जो मानकर virulence को हमें almost nil कर देबा, just सेमानन को हम बॉडी रे इंजेक्ट करा जाए ताकि हम बॉडी रे गोटे मेमोरी क्रिएट हो। हमें जान जे कि हमर जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी अछि दैट इज बेस्ड ऑन मेमोरी, राइट? एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमर मेमोरी ऊपर बेस्ड, तो सेथि भाई हमें सेटा को माइक्रोब मानकर virulence फैक्टर टा को स्टॉप करिके माइक्रोब्स को माने सेमान जेमिति हम बॉडी को डैमेज करि परिबेनी, डिजीज कॉज करि परिबेनी, जस्ट गोटे डेड बा ऑलमोस्ट डीएक्टिवेटेड एसेंचुएटेड माइक्रोब्स दिया जाए वैक्सीन रे। तो सेही माइक्रोब्स डेड माइक्रोब्स जेतले भितरु जिवे सेमाने एंटीजन भली एक्ट करिवे, तो बॉडी रे सेही माइक्रोब्स कर अगेंस्ट रे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हबो। आ बॉडी जो हमर जो मेमोरी टी सेल्स और बी सेल्स आछन सेमाने सेही मेमोरी टी को स्टोर करथिबे ताकि जदी एक्चुअली से इन्फेक्शन टा फर्दर सब्सिक्वेंटली केबे हुए तो हमें जानि जे सेकेंडरी रेस्पॉन्स क्रिएट हबो बॉडी रे, बिकॉज़ प्राइमरी रेस्पॉन्स ऑलरेडी वैक्सीन फॉर्म रे हे जाय छी। हम बॉडी रे ऑलरेडी सही माइक्रोब विषय मेमोरी अच्छी, सही एंटीबॉडीज माने ऑलरेडी मेमोरी बेस रे प्रोड्यूस हेबे। सेकेंडरी रेस्पॉन्स एनामनेस्टिक रेस्पॉन्स हबो, बहुत फास्ट और हाई इंटेंसिटी वाला रेस्पॉन्स हबो, आउ से डिजीज टा बहुत जल्दी हमर इन्फेक्शन टा क्योर हे। तो वैक्सीन रो कांसेप्ट है एटा कि हमें डेड बा एसेंचुएटेड माइक्रोब्स दिया हमें देबा, जो द्वारा बॉडी रे सही एंटीजन जो अछि डेड माइक्रोब्स ता अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो, आ हमर प्राइमरी रेस्पॉन्स मदद रे एक्वायर्ड इम्यूनिटी रो गोटे मेमोरी क्रिएट हे जिवो सही डिस्टिंक्ट इन्फेक्शन पे, ताकि सब्सिक्वेंटली जदी फर्दर से इन्फेक्शन एक्चुअली के बेसे लाइव माइक्रोब्स में एंटर करंदी तो सेकेंडरी रेस्पॉन्स द्वारा इजीली आ हाई इंटेंसिटी रेस्पॉन्स जो इजीली एंड क्विकली हमर इन्फेक्शन टा क्योर हे परिबो। तो जत्ते बेले गोटे होस्ट को कोई भी एंटीजन एक्सपोजर है, एंटीजन कौन? एंटीजन इज एनीथिंग दैट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी इन आवर बॉडी। ओके, तो हमें जानचे एंटीबॉडी के प्रोडक्शन करे, एंटीबॉडी हमरा बी सेल्स बा प्लाज्मा सेल्स माने प्रोडक्शन करंदी केमिति? जत्ते बेले गोटे एंटीजन आसे से एंटीजन ता फर्स्ट रे किछि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का मदर रे किछि हम बॉडी रे किछि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स अछंदी। फॉर एग्जांपल किछि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जेमति हम टिश्यूज रे मैक्रोफेजेस अछंदी, आउ किछि एग्जांपल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल रहउछंदी डेंड्राइटिक सेल्स। तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स माने कोन करिवे? सेही जो एंटीजन हम बॉडी रे अछि सेही एंटीजन टा को
प्रेजेंट करिवे टू द टी लिम्फोसाइट्स ओके टी लिम्फोसाइट्स मानन को से एंटीजन प्रेजेंट करिवे जोटा हमर टी लिम्फोसाइट्स मानन को एक्टिवेट करिवो टी लिम्फोसाइट जेतडा एक्टिवेट हेबे सी एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट बी सेल्स को स्टिमुलेट करिवे ओके बी सेल स्टिमुलेट हेले कोन हबो एंटीबॉडी प्रोडक्शन हबो राइट इडा होची बेसिक प्रोसेस तो एंटीजन कोन एंटीजन जे भी हम बॉडी रे एंटीबॉडी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करे एंटीजन हमर डेड माइक्रोब बा एसेंशिएटेड माइक्रोब होय पारे जोटा वैक्सीन रो एग्जांपल होची वैक्सीन लाइव माइक्रोब होय पारे जोटा इन्फेक्शन द्वारा होय बा आउ कोन होय पारे नॉन लिविंग बॉडीज भी पारे जेने कि अदर प्रोटीन्स एंटीबॉडी एंटीजन किछि होय पारे से गोटे कार्बोहाइड्रेट होय पारे से गोटे प्रोटीन होय पारे से गोटे फैट मॉलिक्यूल होय पारे किछि होय पारे जोटा गोटे फॉरेन बॉडी जोटा एंटीबॉडी रो प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेबो ओके Now this type of immunity is called active immunity. अब एई प्रकार immunity को active immunity कहै छै active immunity कोन active immunity होची सही प्रकार immunity active immunity is that type of acquired immunity in which antibodies are produced in the body of the host क्या बोलला एक्टिव इम्यूनिटी कोन एक्टिव इम्यूनिटी रे एंटीबॉडी होस्ट रो बॉडी रे नीचे प्रोड्यूस हो होस्ट नीचे बॉडी रे नीचे एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेबो सेटा को कहै छै एक्टिव इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी कोन जत्ते बेले एंटीबॉडी होस्ट बॉडी रे प्रोड्यूस हबनी बाहरु डायरेक्टली एंटीबॉडी जो अछि रेडीमेड एंटीबॉडी गुडी को डायरेक्टली होस्ट रो बॉडी रे एडमिनिस्टर करा जबो when ready-made antibodies are directly given to protect the body against foreign agents it is called passive immunity बुझा पड़ला एक्टिव इम्यूनिटी कोन हुए होस्ट रो बॉडी रे एंटीबॉडी रो सिंथेसिस हुए ओके होस्ट रो बॉडी रे इटसेल्फ रे एंटीबॉडी रो सिंथेसिस हुए और पैसिव इम्यूनिटी कोन पैसिव इम्यूनिटी रे एंटीबॉडी होस्ट बॉडी रे सिंथेसिस हुए नहीं रेडीमेड एंटीबॉडी गुडी को फ्रॉम द आउटसाइड होस्ट बॉडी रे एडमिनिस्टर करा जाए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फॉरेन एजेंट्स और प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इन्फेक्शंस ओके जते बेले रेडीमेड एंटीबॉडी बाहर दिया जाए सेटा पैसिव होला बिकॉज़ बॉडी निजे प्रोड्यूस करनी ना सेटा पैसिव होला बॉडी जते बेले निजे काम करी निजे एक्टिव माने निजे एंटीबॉडी प्रोड्यूस कला सेटा एक्टिव इम्यूनिटी जेमिति एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस अछि सही बॉडी So active immunity is slow and takes time to give its full effective response. Obviously, active immunity is slow. तो एठी हमर आउ गोटे प्रकार डिफरेंशिएशन आसी पारे राइट द डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी तो एक्टिव इम्यूनिटी रो फर्स्ट हमर जो फीचर अछि सेटा होछि स्लो एंड इट टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रेस्पॉन्स एक्टिव इम्यूनिटी काहे की स्लो एक्टिव इम्यूनिटी काहे की स्लो बिकॉज़ जते बेले फर्स्ट रे हमें गोटे एंटीजन रो एंट्री हुए हम बॉडी रे बा सेटा वैक्सीन द्वारा हुए बा लाइव एंटीजन हुए तो हमर बॉडी रे प्राइमरी रेस्पॉन्स हो हमें एटा जान छी कि प्राइमरी रेस्पॉन्स इज स्लो एंड लो इंटेंसिटी से प्राइमरी रेस्पॉन्स जते बेले कंप्लीट हबो सेते बेले हम बॉडी रे एंटीबॉडी रो प्रोडक्शन स्टार्ट हबो आ गोटे मेमोरी क्रिएट हबो तो जो एक्टिव इम्यूनिटी सेटा एक्चुअली स्लो तो एक्टिव इम्यूनिटी केते बेले इंपार्ट करबा दरकार जते बेले हमें प्रिवेंशन पई जते बेले हमें प्रिवेंशन करिया पई चेष्टा करछे कोनोसी इन्फेक्शन रो सेते बेले एक्टिव इम्यूनिटी इंपोर्टेंट जेमिति हमें वैक्सीन काहे देले सपोज हमें देले हेपेटाइटिस बी रो हमें वैक्सीनेशन करले तो सेथिरे हमें डेड बा एसेंशिएटेड वायरस दिया जाउछि कि नै एक्चुअली से हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का डीएनए वैक्सीन सेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होछि तो सेटा हमें नै हमें बीसीजी वैक्सीन जोटा ट्यूबरकुलोसिस में दिया जाए तो सेथिरे हमरा डेड बा एसेंशिएटेड माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबर इंजेक्ट करा गला हम बॉडी रे राइट बीसीजी वैक्सीन फॉर्म रे तो सीए कोन करला सीए जाय के हम बॉडी रे गोटे मेमोरी क्रिएट करला तो एटा हम कम आइ देले प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस ताकि जतले एक्चुअल ट्यूबरकुलोसिस हम बॉडी रे आसीबो जतबेले सेटा जल्दी जल्दी क्योर हो जिवो आ ता एक्चुअल डिजीज ता मैनिफेस्ट हबो नै तो प्रिवेंशन पे एक्टिव इम्यूनिटी इज हेल्पफुल बिकॉज़ एक्टिव इम्यूनिटी एक्चुअली स्लो एंड टाइम लगिवो तार इफेक्टिव रेस्पॉन्स आसे हमें injecting the microbes deliberately during immunization or infectious organism gaining access to the body during natural infection induce active immunity obviously jete bela hame deliberately microbes manu body re inject karu in case of immunization au ba jete bela infectious organism mane access gain kar diyanti ଆମ body bhitar asiya pai during natural infection sete bela ଆମ body re active immunity induction hoye hala और पैसिव इम्यूनिटी केते बेले इंपोर्टेंट पैसिव इम्यूनिटी ट्रीटमेंट पा इंपोर्टेंट सपोज तोर हमको गोटे का गोटे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट रे सीवियर इंजरी हिच तो फर्स्ट रे हमें ताको आउ से बहुत सारा कंटामिनेटेड सॉइल रे पड़ी जायछि तार सारा माने जो एपिडर्मिस डर्मिस रप्चर हे जायछि और ब्लीडिंग होछि तो सेथिरे फर्स्ट हमको इन्फेक्शन प्रिवेंट करिया पे टिटानस टॉक्सॉइड दिया जाए ओके टिटानस टॉक्सॉइड कोन टिटानस टॉक्सॉइड is not an antigen it is an ready made antibody मतलब tetanus toxoid जो अछि सेटा ready made antibody because
ऑलरेडी इन्फेक्शन हो जाए से इन्फेक्शन को हमको प्रिवेंट करिया पड़ियो और बॉडी रे एंटीबॉडी सिंथेसाइज हेबा पई टाइम लागिवो हमको एते टाइम नहीं हम पाखरे टिटेनस इन्फेक्शन जदी हे गला तो टिटेनस इज इनक्यूरेबल राइट तो सेटा को प्रिवेंट करिया पई हमें रेडीमेड एंटीबॉडी देबा सपोज स्नेक बाइट हला माने स्नेक रो वेनम ऑलरेडी हम बॉडी को आसी गलानी तो ता अगेंस्ट जदी हमें वेट करबा नेचुरली एंटीबॉडी रो प्रोडक्शन पई एक्टिव इम्यूनिटी पई तो सेटा बहुत स्लो सेति भितरे से लोकर डेथ भी हे पारे तो इमीडिएटली हमको एंटी वेनम देबा को पड़ियो एंटी वेनम टा होचे से स्नेक वेनम अगेंस्ट रेडीमेड एंटीबॉडीज जोटा हमें ताइतरे इंजेक्ट करछे तो रेडीमेड एंटीबॉडीज जदी दिया गला तो ट्रीटमेंट बेसिस रे दिया जाए ट्रीटमेंट पई दिया जाए और सेटा को ही पैसिव इम्यूनिटी कहा जाए ओके now why mother's milk is considered very essential for newborn infant mother's milk काहे की newborn infant में very essential obviously infant किछि जिंस डाइजेस्ट करि परिबेन ता पे सोल सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन मदर मिल्क बट मदर मिल्क रो आउट इंपोर्टेंस भी अछि जेमदी एबे बहुत सारा हमरो मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स बाहला जेमदी कि सेरेलैक आमर नेस्ले रो भी किछि किछि बाहलानी सेरेलैक एंड एक्सेट्रा जोटा मदर मिल्क रो सब्स्टिट्यूट बोली कहा जाए बट एक्चुअली मदर मिल्क रो सब्स्टिट्यूट माने ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन ऑन द बेसिस ऑफ विटामिन्स मिनरल्स बा जहां भी सेतरे न्यूट्रिएंट्स अछि सेही बेसिस से समान रिप्लेसमेंट करले बट आ गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिंस अछि जोड़ा समान केबे भी रिप्लेस करि परिबेनी सेडा होछि हमरो कोलेस्ट्रॉल रे प्रेजेंट थिबा एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन ए तो जो येलोइश फ्लूइड जहाँ को कोलोस्ट्रम कहा जाए फर्स्ट मिल्क जेतेबेले मदर रो ब्रेस्ट रो आसे सेटा को कोलोस्ट्रम कहा जाए ओके सेटा जनरली येलोइश कलर थाए जो येलोइश फ्लूइड कोलोस्ट्रम मदर ब्रेस्ट से सिक्रेट हुए सेटा को ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ओके ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन कौन हुए तो ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन हला जेतेबेले हम इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन कथा कहछ माने स्टार्टिंग रे फर्स्ट जेतेबेले लैक्टेशन स्टार्ट हुए जेतेबेले गोटे येलोइश कलर फ्लूइड जोटा को कोलोस्ट्रम कहा जाए सेटा मदर रो ब्रेस्ट टू सीक्रेट हुए और सेही जो कोलोस्ट्रम सेटा वेरी एसेंशियल फॉर द इन्फेंट बिकॉज़ सेही कोलोस्ट्रम रे एबंडेंट अमाउंट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडी था एबंडेंट एंटीबॉडी था सेथिरे इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडी जो था सेटा मदर रो कोलोस्ट्रम रे था तो सेमाने जदी भी मदर मिल्क रो सब्स्टिट्यूट ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन करिसंदी बट बेबी को infections because the infant है से बहुत obviously बहुत highly susceptible है because their immune system अभी भी develop है ही न था only innate immunity द्वारा present है because जोड़ा birth through present अछि सेति में ताकू in order to protect that baby से baby को बहुत सारा infections रू prevent करियारू help करे एही immunoglobulin सेति में mother's milk important for the infant till the age of 6 months है ना तो येलोइश फ्लूइड जो अछि कोलोस्ट्रम सेटा मदर मिल्क रे जोटा इनिशियल डेज ऑफ वैक्सीनेटेड सेथरे एबंडेंट अमाउंट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी था जोटा इन्फेंट को प्रोटेक्ट करे द फीटस आल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम देयर मदर थ्रू द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एटा होछि इम्यूनोग्लोबुलिन जी मन रखो केतना इम्यूनोग्लोबुलिन थिला GAMED पांचला इम्यूनोग्लोबुलिन था ना हमें पढ़ी छे तो एटा भी हमर एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी काहे केला बिकॉज़ इन्फेंट बॉडी रे एंटीबॉडी इन्फेंट रो बॉडी रे प्रोडक्शन हो रेडीमेड एंटीबॉडी इन्फेंट रो बॉडी रे एडमिनिस्टर होची बाय द कोलोस्ट्रम इम्यूनोग्लोबुलिन ए तो एटा भी एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी सिमिलरली आउट जिंस द फीटस आल्सो रिसीव सम एंटीबॉडी से किछि एंटीबॉडी से टाइम रे भी मन रखो गोटे इम्यूनोग्लोबुलिन अछि जोटा को इम्यूनोग्लोबुलिन जी कहा जाय से इम्यूनोग्लोबुलिन जी एटा प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करि पारे एटा इंपोर्टेंट आउ कोन से इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करि परिबेनी ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो अछि सेटा प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करिकि मदर रो ब्लड रो फीटस भीतर को आसी परिबा और सेटा भी फीटस को इन्फेक्शंस रो प्रोटेक्ट करिया पे हेल्प करे ओके तो प्लेसेंटा को क्रॉस करके इम्यूनोग्लोबुलिन जी आसे फीटस बॉडी को और कोलोस्ट्रम थ्रू रे इम्यूनोग्लोबुलिन ए तो दीटा जाको एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी बिकॉज़ सेटा फीटस बॉडी प्रोडक्शन होनी रेडीमेड एंटीबॉडी बाहर फीटस रो बॉडी रे आसुची इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन ओके दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी एबे मु जेमि कहउछली कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी दीटा जाको नेचुरल और आर्टिफिशियल अछि तबे नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कोन नेचुरल और आर्टिफिशियल कोन नेचुरल और आर्टिफिशियल माने जोटा नेचुरल प्रोसेस रे होय नेचुरली होय और आर्टिफिशियल माने जोटा आर्टिफिशियली करा जाय जोटा एक्चुअली गोटे नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस नो राइट तो एक्टिव इम्यूनिटी कोन एक्टिव इम्यूनिटी हम बॉडी रे एंटीबॉडी प्रोडक्शन होची
तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कौन जोटा गोटे नेचुरल प्रोसेस द्वारा आम बॉडी रे एंटीबॉडी प्रोडक्शन हम एटा होची नेचुरल इन्फेक्शन ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन आम बॉडी रे जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन हुए सेटा होची हमरो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी बुझला ड्यूरिंग ए नेचुरल इन्फेक्शन बिकॉज इन्फेक्शन है बड़ा नेचुरल सेटा नेचुरल वेयर है तो बायोलॉजिकल प्रोसेस द्वारा हम बॉडी रे एंटीबॉडी प्रोडक्शन होला अगेंस्ट दैट इन्फेक्शियस एजेंट सेटा होची हमरो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कोन आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होची इम्यूनाइजेशन हला इम्यूनाइजेशन इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस सेटा गोटे आर्टिफिशियल प्रोसेस ओके आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी ऑब्वियसली इम्यूनाइजेशन तो नेचुरल प्रोसेस नहीं सेटा गोटे बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं प्रिवेंशन करया पे हम इम्यूनाइजेशन करूचे आर्टिफिशियली बाय गिविंग इंजेक्शन राइट तो सेटा हला आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी आर्टिफिशियल तो हला एक्टिव इम्यूनिटी काहे गेला बिकॉज़ हमें रेडीमेड एंटीबॉडी इंजेक्ट करने हमें एंटीजन एक्टिव इंजेक्ट करछ एंटीजन जो हमें इंजेक्ट करछे सेही प्रोसेस ता आर्टिफिशियल हला बट एंटीबॉडी ता हम बॉडी रे ही प्रोड्यूस होछि तो सेटा पे नेचुरल तो आर्टिफिशियल नेचुरल आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है ना सेटा एक्टिव इम्यूनिटी बिकॉज़ हम बॉडी रे एंटीबॉडी प्रोडक्शन एबे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कोन पैसिव इम्यूनिटी जोटा बाहर एंटीबॉडी आछि नेचुरली कोठे आछि फीडिंग द्वारा बा प्लेसेंटा द्वारा तो जो कोलोस्ट्रम रे इम्यूनोग्लोबुलिन ए आछि फिटस को आ प्लेसेंटा क्रॉस करी इम्यूनोग्लोबुलिन जी आछि से दिटा होचनी एग्जांपल ऑफ नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है ना पैसिव इम्यूनिटी बिकॉज़ एंटीबॉडी बाहर आसुची और नेचुरल बिकॉज़ इट नेचुरल प्रोसेस आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कोन आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी रा एग्जांपल मु तुमको ऑलरेडी कहि देई छी टिटानस टॉक्सॉइड एंड एंटीवेनम टिटानस टॉक्सॉइड और एंटीवेनम होचनी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी बस ऑलरेडी ताको इंजरी हे जाय छी ता बॉडी रे हम सस्पेक्ट करछे कि ऑलरेडी क्लोस्ट्रिडियम टिटानी जो अछि बैक्टीरिया सेटा ऑलरेडी एंटर कर सारला तो ताको प्रिवेंट करिया में जेबे एक्टिव इम्यूनिटी वेट करबा इन्फेक्शन हे जाय पारे तो ताको इमीडिएटली प्रिवेंट करिया पे हमको रेडीमेड एंटीबॉडी इंजेक्ट करिया पड़ियो तो इंजेक्शन इज एन आर्टिफिशियल प्रोसेस और रेडीमेड एंटीबॉडी बाहर दे जाछि सेति पे आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी सिमिलरली स्नेक बाइट प्रिवेंट करिया पे जो एंटीवेनम दिया जाय सेटा भी artificial passive immunity next होची हमर vaccination and immunization the principle of immunization or vaccination is based on the property of memory हैला देखो तुम बारंबार कह सारछि कि वैक्सीनेशन बाय इम्यूनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑब्वियसली वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन को टाइप रो इम्यूनिटी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी ओके नेचुरल सॉरी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी बारंबार भूल कोछि बोल से सुनो वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन को टाइप इम्यूनिटी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी आर्टिफिशियल बिकॉज़ आर्टिफिशियल इंजेक्शन दिया जाए एक्टिव बिकॉज़ आम बॉडी रे एंटीबॉडी रे प्रोडक्शन हुए आ एटा को प्रॉपर्टी ऊपर बेस करे इम्यून सिस्टम रो मेमोरी वाला प्रॉपर्टी ऊपर बेस करे बिकॉज़ हमें जानि छे इम्यून सिस्टम हमर जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी अछि दैट इज बेस्ड ऑन मेमोरी प्राइमरी रेस्पॉन्स रे जो मेमोरी गेन हेता है ता जो को सेकेंडरी रेस्पॉन्स ता हाई इंटेंसिटी हुए सेति में प्राइमरी रेस्पॉन्स नेचुरली हेबार वेट करबा अपेक्षा हमें जदी आर्टिफिशियली प्राइमरी रेस्पॉन्स को इंड्यूस करे परिबा बाय गिविंग वैक्सीनेशन तो से मेमोरी टा ऑलरेडी क्रिएट हे गला ओके तो मेमोरी से जो क्रिएट हे गला तो फर्स्ट हमर जो प्राइमरी रेस्पॉन्स टा बहुत स्लो होता है सेति में एटा प्रिवेंशन पाई हला बहुत जो इन्फेक्शियस डिजीज अछि समान को एक्चुअली हेबारो एक्चुअली जतबे समान हेबे सेटा जो वेट करथिबा कि प्राइमरी रेस्पॉन्स टा नेचुरल इन्फेक्शन द्वारा आसे तो सेटा इन सम केसेस फैटल भी हे पार तो सही एक्चुअल डिजीज टा हबा पूर्वरु प्रिवेंशन पाई हमें ऑलरेडी प्राइमरी रेस्पॉन्स को इंड्यूस कर देथिबा तो जतबे एक्चुअल इन्फेक्शन जदी होला तो सेटा सेकेंडरी रेस्पॉन्स रे हो तो memory of the immune system over based immunization or vaccination in vaccination a preparation of antigenic proteins of the pathogen or inactivated or weakened pathogens are introduced into the body obviously mo tom एटा कहिची vaccination में कोन करा जाय गोटे एंटीजेनिक प्रोटीन्स रो प्रिपरेशन बनाया जाय सेटा इधर एंटीजेनिक प्रोटीन हे थाई पारे बा सेटा डेड माइक्रोब्स हे थाई पारे ओके वैक्सीनेशन रे कोन करा जाय गोटे एंटीजेनिक प्रोटीन्स रो प्रिपरेशन करा जाय से एंटीजेनिक प्रोटीन्स ता पैथोजेन रु माने निया जाय थाए ओके पैथोजेन रु
किसी एंटीजेनिक प्रोटीन्स हार्वेस्ट करके तार गोटे प्रिपरेशन बनाया जाए, अदरवाइज इनएक्टिवेटेड और वीकेंड और किल्ड पैथोजन को भी डायरेक्टली इंजेक्ट करा जाए पारे। ओके, इनएक्टिवेटेड, एसेंचुएटेड, इनएक्टिवेटेड बा वीकेंड पैथोजन जार विरुलेंस को हमें काढी देछे सेटा देले डिजीज हबनी, जस्ट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन टाइम रे किछि वैक्सीन्स रे फीवर आसी पारे। ओके, आउ पेन आसी पारे, लोकलाइज्ड पेन सेटा तो ऑब्वियसली हबो ही, बिकॉज़ किछि फॉरेन बॉडी एंटर करछि तो इन्फ्लेमेशन तो रहिबो। Obviously, in vaccination, antigenic proteins दिया जाए पर inactivated और weakened pathogen दिया जाए पर but dead pathogen दिया जाए पर the antibodies produced in the body against these vaccines would neutralize the pathogenic agents during actual infections. तो এই artificial infection एटा हम artificial infection induce करो छे। ओके, तो এই artificial infection जोगु जो primary response हबो सेथरे जो antibody produce हेथिबे समानकर memory जोगु ଯେତେବେଳେ actually infection ହବ, actually ଯେତେବେଳେ natural infection ହବ ସେଇ ଥର ଯୋଉ actual antigen ମାନେ enter କରିବେ, molecule ମାନେ enter କରିବେ, ସେଇ ଯୋଉ already prepared antibodies ମାନେ ଆମ body ରେ ଥିବେ ସେଇ antibody ମାନେ ଏଇ antigen ମାନଙ୍କୁ neutralize କରେଇଦେବେ। ଓକେ, ଆଉ vaccines also generate memory B and T cells, obviously ଏଟା ଗୋଟେ important MCQ, এটা ଗୋଟେ important MCQ, vaccines generate memory B cells and memory T cells, obviously memory B cells and memory T cells ମାନଙ୍କ function ही memory रखिबा। ओके, memory store करिबा जोटा primary response time रे gain हिची। The vaccines द्वारा memory B cells और memory T cells मानकर भी generation हुए that recognize the pathogen quickly on subsequent exposure and overwhelm the invaders with a massive production of antibodies. Obviously, memory B cells और memory T cells मानकर primary response time रे memory store की था, तो obviously जेतेबे subsequent exposure हुए ସେମାନେ pathogen को quickly recognize करंती और invaders माननको massive production of antibody द्वारा overwhelm कर दियंती। massive production of antibody खाली किबे because it's a secondary response. If a person is infected with some deadly microbes to which quick immune response is required, as in case of tetanus, देखो जदि person को किसी deadly microbes होला, जदि deadly microbes जोटा actually fatal है पारे, जदि person को किसी deadly microbe रो infection है to which quick immune response is needed, quick immune response जदि दरकार, हमें wait करी परिमानी active immunity को, we can't wait for the active immunity to come into play. Okay, हमको immediate response दरकार, तो हमें सही केस रे passive immunity रो help लेना, ready-made antibody inject कर, deadly microbe जदि किसी person को जदि deadly microbe infection है, for example tetanus जोड़ा मु तुमु और पे ही example देइछली, we need to directly inject pre-formed antibodies और इटा हमर artificial passive immunity हबो और antitoxin एंटी प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी बा एटा को टॉक्सॉइड कहा जाए बा एंटीटॉक्सिन जहां भी जो प्रिपरेशन रे ऑलरेडी से एंटीबॉडीज प्रिपेयर है कि थिबो हला, एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रिपेयर है कि थिबो अगेंस्ट दैट एंटीजन और अगेंस्ट दैट टॉक्सिन और अगेंस्ट दैट वेनम। इवन इन केसेस ऑफ स्नेक बाइट्स देखो एटी भी लिखा है जी, स्नेक बाइट केसेस रे भी जो इंजेक्शन दिया जाए पेशेंट मानन को सेते प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज थाए अगेंस्ट दैट स्नेक वेनम। दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन। Obviously, this type of immunization is called passive immunization. The immunization be two types: active immunization, passive immunization. Passive immunization the passive immunity induce, active immunization the active immunity induce. तो deadly microbes बा snake venom केस रे immediate response दरकार, से pre-formed antibody inject करा। अबे देखो एटा और important जिंस recombinant DNA technology has allowed the production of antigenic polypeptides of pathogens in yeast or bacteria. तो recombinant DNA technology रो help रे हमें ईस्ट और बैक्टीरिया भली होस्ट रे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कोन तुम सेटा जानथिबो जदि तुम बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर पढिथिबो। ओके, तो बायोटेक्नोलॉजी हम कोन पढछे कि को गोटे अदर ऑर्गेनिज्म रो जीन को बा अदर ऑर्गेनिज्म रो डीएनए रो गोटे फ्रैगमेंट को जोटा हमरो जोथरे हमरो जीन ऑफ इंटरेस्ट है सेटा को हमें को गोटे होस्ट ऑर्गेनिज्म रे इंसर्ट करि परिबा विद द यूज ऑफ वेक्टर्स लाइक प्लाज्मिड्स। और से होस्ट जनरली रैपिडली मल्टीप्लाइंग हबा दरकार, हमको अल्प टाइम रे लार्ज अमाउंट ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन मिल परिबो। तो सेही जो डिजायर्ड प्रोटीन जो हमको मिलिबो सेही एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स गुडी को हम नै के हमें वैक्सीन प्रोड्यूस करि परिबो। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रो हेल्प रे हमें लार्ज अमाउंट्स ऑफ वैक्सीन्स प्रोड्यूस करि परिबा अगेंस्ट दोज डिजीजेस जोटा रो क्योर इजीली नाही। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हेल्प रे हमें एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स
ऑफ पैथोजन को लार्ज अमाउंट रे बैक्टीरिया और यीस्ट भली होस्ट भितर सिंथेसाइज करे परिबा और एथिरु हमें जो वैक्सीन्स प्रोड्यूस करबा यूजिंग दिस अप्रोच अलाउ लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड greater availability for immunization. Our सबुठ important example होची hepatitis B vaccine produced from yeast. Important MCQ को वैक्सीन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा प्रोडक्शन हुए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और को होस्ट भितर प्रोड्यूस हुए आंसर इज ईस्ट मन रखो ईस्ट इज अ होस्ट इन दिस केस ओके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा हमें लार्ज अमाउंट रे एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स प्रोडक्शन करि परिबा बैक्टीरिया और यीस्ट भली होस्ट भितर और एथरु जो वैक्सीन प्रोडक्शन हो ताने हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन और ग्रेटर अवेलेबिलिटी से हमको प्रोवाइड करिवो एग्जांपल होची हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जोटा ईस्ट होस्ट रे प्रोडक्शन होय नेक्स्ट हमें पढ़वा एलर्जी विषय एलर्जी कोन व्हेन यू हैव गॉन टू अ न्यू प्लेस एंड सडनली यू स्टार्टेड स्नीजिंग wheezing for no explained reason and when you went away your symptoms disappeared एटा त हम सहित हेतिबो जेतरा हम सडनली कोन गोटे नुवा प्लेस को जाए और नुवा प्लेस को हम सडनली हमर स्नीजिंग और व्हीजिंग स्टार्ट होय और जेतरा हम सेटु दूर ही हो जाए आपे आपे से स्नीजिंग और व्हीजिंग ठीक हो जाए तो सम ऑफ अस आर सेंसिटिव टू सम पार्टिकल्स इन द एनवायरनमेंट तो किछि लोक समस्त सहित एटा हुएनी किछि लोक सहित है और किछि पर्टिकुलर आर्टिकल बा ऑब्जेक्ट अगेंस्ट रे हुए तो किछि पर्टिकुलर एंटीजन अगेंस्ट रे किछि पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स माने मोर सेंसिटिव थांत जेमेति कि सम पीपल किछि लोकन को डस्ट एलर्जी थाए तो सेही लोक माने डस्ट जो एंटीजन सेही एंटीजन अगेंस्ट रे अधिका सेंसिटिव थांत तो सेमान को बॉडी रे जदी डस्ट एंटर करला तो एग्रावेटेड इम्यून रेस्पॉन्स देखा जाए एग्रावेटेड इम्यून रेस्पॉन्स माने नॉर्मली जति के हेबा कथा ताठू टिके अधिका देखा जाए बिकॉज़ सेमन सेही पर्टिकुलर एंटीजन अगेंस्ट रे मोर सेंसिटिव थांती ओके सेटा ही एलर्जी रो बेसिस एलर्जिक रिएक्शन कोन सेटा गोटे एग्रावेटेड इम्यून रेस्पॉन्स अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एंटीजन इन सम ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स ओके so above mentioned reaction can be because of allergy to pollen mites which are different in different places तो allergic को टाइप का allergy है को टाइप एलर्जी पर एलर्जी पोलन ग्रेन अगेंस्ट है पर एलर्जी डस्ट अगेंस्ट है पर किछ लोगों को मिल्क प्रोडक्ट्स अगेंस्ट एलर्जी था किछ लोगों को पीनट्स बा नट्स अगेंस्ट एलर्जी ओके तो जहां जो अगेंस्ट एलर्जी था सेटा कंज्यूम करले बस ए अगेंस्ट एलर्जी को एक्सपोज हेले समानकर एग्रेवेटेड इम्यून रिस्पांस देखा को मिले ओके एग्रेवेटेड बा एक्सैजरेटेड रिस्पांस ना तो डेफिनेशन ऑफ एलर्जी कोन definition of allergy is the exaggerated response of the immune system to certain antigens present in the environment is called allergy. Important definition: exaggerated response immune system ra eta gote exaggerated response against certain antigens present in the environment is known as allergy. Substances to which such an immune response is produced as called allergens. तो जो substance against रे allergic reaction produces ए substance मानन को allergen कहते हैं. सही antigen मानन को एटी गोटे specific name दिया जायछि एटा होछि allergen. Now antibodies produced in this case are IgE type. Very important MCQ eta मन रखिबो. Allergic reaction रे कोन type of antibodies produced है IgE by immunoglobulin E and antibodies produced. मन रखिबो important. Which kind of antibody mediate allergic reactions? Answer होछि immunoglobulin E by IgE. Okay. Now common examples of allergens are mites in डस्ट पोलन्स एनिमल डैंडर एटसेट्रा. तो किछि लोगों को डॉग और कैट मानन को प्रति एलर्जी था. डॉग बा कैट पाखो आसबे डॉग और कैट रो फर जो किछि किछि माइट्स थांती बा डस्ट था बा समन को जो आइकुन फर पार्टिकल्स था से गोडी को इनहेल करले भी किछि लोगों को एलर्जी था. तो सामान्य पेट्स रखंतनी घर डस्ट पोलन एनिमल मानको टेंडर इज सब कॉमन एग्जांपल ऑफ एलर्जन. सब एलर्जिक रिएक्शन रे इम्यूनोग्लोबुलिन ई मीडिएटेड रिएक्शन हवला. सिम्पटम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस कोन हे पारे स्नीजिंग हबो, वाटरी आईज आखिरु पानी आसीबो, नाकरु पानी आसीबो, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. सीवियर केसेस रे ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी हबो बिकॉज़ एलर्जिक रिएक्शन रे इम्यूनोग्लोबुलिन ई मीडिएटेड जो रिएक्शन हबो सेथिरे हम बॉडी रे जो मास्ट सेल्स माने असने सामने लार्ज अमाउंट्स ऑफ हिस्टामिन प्रोड्यूस करिवे. लार्ज अमाउंट्स ऑफ हिस्टामिन प्रोड्यूस करले कोन हबो लार्ज अमाउंट्स ऑफ हिस्टामिन जतले प्रोड्यूस हबो हला तो सेही केस रे हमरो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हबो और वासोडाइलेशन हबो. लार्ज अमाउंट्स ऑफ हिस्टामिन प्रोडक्शन हबो हला. हिस्टामिन प्रोडक्शन जो कोन हबो वासोडाइलेटेशन हबो. वासोडाइलेटेशन हले कोन हबो बीपी रे फॉल हे परिबो
और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हम ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन माने हमर ब्रोंकोस्टा कंस्ट्रिक्ट हे जीव जोटा जोटा जो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो बुझलो constriction of bronchus or dilatation of the blood. तो sneezing, watery eyes, runny nose, difficult in breathing is allergic reaction the symptom. Allergy कौन allergy is due to the release of chemicals like histamine and serotonin from the mast cells. जोटा मु एबे भी तुमको कहली कि जते बेले किछि गोटे एलर्जन रो एक्सपोज हुए इम्यूनोग्लोबुलिन ई मेडिएटेड रिएक्शन रे मास्ट सेल्स माने स्टिमुलेट हेबे और से माने किछि केमिकल्स प्रोडक्शन करिवे इंपोर्टेंट एमसीक्यू को केमिकल्स आर रेस्पोंसिबल व्हिच केमिकल्स आर रेस्पोंसिबल फॉर allergic reaction answer is histamine and serotonin very very important barambar kochi histamine and serotonin are the chemicals which are responsible for allergic reaction अब ये secret करें mast cell for determining the cause of allergy the patient is exposed to or injected with very small doses of possible allergen तो केमिति जଣା पड़े कि एई पेशेंट को कोन एंटीजन अगेंस्ट रे एलर्जी अछि बा एई पेशेंट पई एलर्जन कोन तो से तो सेटा पई गोटे एलर्जी टेस्ट है जो से पेशेंट को बहुत माइक्रो 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 अमाउंट रे वेरी स्मॉल डोजेस रे किछि किछि एलर्जन को एक्सपोज करा जाए जो एक्सपोजर रे ता बॉडी रे एलर्जिक रिएक्शन देखा जिवो तो से माने सेथरे टेस्ट करबे तो सेमे वेरी स्मॉल डोजेस दिया जाए ताकि फाटल रिएक्शन न होए ओके and the reactions are studied. The use of drugs like antihistamine, adrenaline, and steroids quickly reduce the symptom of allergy. Now, a very very important MCQ: कोउ drug हमें use करिवा allergy रे symptom को alleviate करिया पई बा quickly reduce करिया पई. Allergy रे symptom को reduce करिया पई कोउ drug use करा जाए एंटीहिस्टामिनिक्स माने से हिस्टामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देबो तो हिस्टामिन रिएक्शन हबनी तो एलर्जी रे सिम्पटम्स आसीबनी हला तो फर्स्ट ड्रग होची हमर एंटीहिस्टामिनिक तापर आसीबो हमर एड्रेनालिन वेरी वेरी इंपोर्टेंट एड्रेनालिन केमिति एलर्जिक रिएक्शन को एलिविएट करे सेटा हमें एमबीबीएस जॉइन हला परे पढिबो फार्माकोलॉजी रे एंड स्टीरॉइड्स भी हमर सिम्पटम्स को क्विकली रिड्यूस करबार हेल्प करिवे somehow modern day lifestyle has resulted in lowering of immunity and more sensitivity to allergens obviously हमर जो modern day lifestyle अछि जोटा बहुत ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल से अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो हमर इम्यून सिस्टम गुडी को वीक हेलानी और इम्यून सिस्टम जेतो वीक हेलानी तो मोर सेंसिटिविटी टू एलर्जन लाली लोक मन को देहरे मोर काइंड्स ऑफ न्यू काइंड्स ऑफ एलर्जी देखियो को मिलछि अर्लियर डेज रे अर्लियर डेज रे जो हमर इम्यून सिस्टम गुडी को स्ट्रॉन्गर लाइफस्टाइल जो ओके अर्लियर डेज ड्यू टू ड्यू टू स्ट्रॉन्गर लाइफस्टाइल से स्ट्रॉन्ग थिला लोक माने सेमिदिया सब अनहेल्दी लाइफस्टाइल स्ट्रॉन्ग एलर्जी थिला जनरली लिमिटेड रहला बहुत कम टाइम तक एलर्जी था एबे जे तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल इम्यूनिटी सब लोअर हेलानी इम्यूनिटी लोअर हेबा जो मोर नंबर ऑफ मोर सेंसिटिविटी टू एलर्जेंस देखा गलानी मोर एंड मोर चिल्ड्रन इन मेट्रो सिटीज सफर फ्रॉम एलर्जीज एंड अस्थमा भी गोटे kind of allergic reaction because जतबे अस्थमा रो अटैक से सेतबे भी सिमिलर जिंस होय जतबे सामने किछ गोटे पोलन बा डस्ट को एक्सपोज होंती सेतबे अगेन से हिस्टामिन प्रोडक्शन में जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करे और अस्थमा हो तो अस्थमा रो ट्रीटमेंट में भी एंटीहिस्टामिनिक्स ही जनरली लिया okay due to sensitivity to the environment this could be because of protected environment provided in early life एबे जो early life रे बहुत अधिक protected environment रे रखा जाउछ ना छोटा पिला सेमे हमर इम्यूनिटी डेवलप हे करनी एबे हमें नेक्स्ट तीटा टॉपिक आज कवर करिवा सेटा होची इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी एंड एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम ओके तीटा टॉपिक आज हमें कवर करिवा इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी हमर बॉडी रे इम्यून सिस्टम को बडे ऑर्गेनाइज है छी कोन कोन हमर कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम ह्यूमन इम्यून सिस्टम रे कोन कोन कंपोनेंट्स अछंदी आउ what बहुत ही डेंजरस इन्फेक्शियस डिजीज जोटा एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जे हमर इम्यून सिस्टम को ही एंडेंजर कर दिए ओके से निजे गोटे डिजीज नहीं से निजे गोटे सिंड्रोम कलेक्शन ऑफ डिजीजेस से जेतो हम इम्यूनिटी को लोअर करछि तो सबुटू जो बहुत कॉमन डिजीज जो मानकर जनरली नॉर्मल लाइफ रे इन्फेक्शन माने एते इन्फेक्शियस नांती बा एते खतरनाक मैनिफेस्टेशन शो करिवेनी बट बिकॉज़ हमर इम्यूनिटी एटे लो हो जाय छी बा इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाय छी सेति पई छोटो रु छोटो इन्फेक्शन भी बहुत डेंजरस मैनिफेस्टेशन शो करबो
First, immune system of the body कौन देखो the human immune system consists of lymphoid organs, tissues, cells and soluble molecules like antibodies. तो human immune system रा कौन generally human immune system रा कौन component? तो human immune system रा components को जो हम देखिए lymphoid organs ମାନେ ଅଛନ୍ତି, tissues ଅଛନ୍ତି, cells ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି soluble molecules ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ antibodies କୁହାଯାଏ। ଓକେ, এটা হচ্ছে আমরা হিউম্যান ইমিউন সিস্টেমର ইনফ্রাস্ট্রাকଚର। ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମର କଣ କଣ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି? ଗୋଟେ ହଉଛି lymphoid organ, ଗୋଟେ ହଉଛି tissues, cells ଆଉ କିଛି soluble molecules ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକୁ antibodies କୁହାଯାଏ, ରାଇଟ୍? lymphoid organs ଭିତରେ କଣ କଣ ଆସିବ? Again primary lymphoid organs ଅଛନ୍ତି ଆଉ secondary lymphoid organs ଅଛନ୍ତି। ତ human immune systemରେ primary lymphoid organ ଆଉ secondary lymphoid organ, କିଛି tissues, କିଛି cells ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆମେ already starting ରେ ପଢିଛେ innate immunity account, T lymphocytes, B lymphocytes, natural killer cells, right? neutrophils, macrophages ସେ ସବୁ ଆଉ obviously antibodies ତ ଅଛନ୍ତି। The immune system is unique in the sense that it recognizes foreign antigens, responds these and remembers them। तो immune system ର କଣ unique feature? First होची ସେ foreign antigens ମାନଙ୍କୁ recognize करे ଆଉ differentiate करे from the self antigens। ନିଜ self cells, okay, ନିଜର the self body, ନିଜ bodyରେ ଯୋଉ cells ଅଛି self cells comparison ରେ ସେ self cells ରୁ foreign cells ମାନଙ୍କୁ ବା foreign agents ମାନଙ୍କୁ ବା foreign antigens ମାନଙ୍କୁ differentiate କରିପାରୁଛି। Okay, it can recognize the foreign antigens and differentiate it from the self cells। ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର first characteristic। second ହଉଛି ସେମାନଙ୍କ against ରେ ଗୋଟେ response produce କରେ, ସେଟା first time ପାଇଁ primary response, ତାପରେ secondary response ଆଉ subsequent response ଆସିବ and remembers them ଆଉ ତା ପାଖରେ memory ବି ଅଛି। first ହଉଛି ସେ foreign କୁ self cells ରୁ differentiate କରିପାରୁଛି, ଯାହାକୁ ସେ only foreign antigens against ରେ response ଦଉଛି, primary response ଆଉ secondary response ଆଉ memory ବି ଗୋଟେ important component ଅଛି। Immune system also plays an important role in allergic reactions, autoimmune diseases and organ transplantation। Obviously immune system ର କିଛି important role ଅଛି allergic reaction, immune system ର ହି role ଅଛି। autoimmune diseases case ରେ ବି ଆମର immune system ର ହି defect ଯୋଉ ସେ self cells କୁ foreign cells ରୁ identify କରିପାରୁନି ଆଉ self cells ଉପରେ ହି attack କରୁଛି। ଆଉ organ transplantation ରେ ବି immune system ର role ଅଛି, ଯୋଉଟା cell mediated immunity, graft rejection ବା जो tissue implanted ଅଛି ସେଇଟାକୁ reject करे। First ଆସିଲା ଆମେ lymphoid organs। The lymphoid organs where the origin and or maturation of proliferation of lymphocytes occurs। तो lymphoid organs कौन? What are the lymphoid organs? Lymphoid organs are those organs where origin and or maturation and proliferation of lymphocytes occur। तो lymphoid organs होचनी सही organs जोठे origin of lymphocytes and or maturation and proliferation of lymphocytes ସେଇ organs ରେ origin ହେଇ ପାରେ lymphocytes ମାନଙ୍କର ଆଉ maturation or proliferation ବି ହେଇ ପାରେ। ତ primary lymphoid organs और secondary lymphoid organs होचनी lymphoid organs ଦି प्रकार। primary lymphoid organs कौन? bone marrow and thymus होचनी हमारा primary lymphoid organs। important question, bone marrow and thymus होचनी primary lymphoid organs। primary lymphoid organs रे कौन हुए? immature lymphocytes differentiate into antigen sensitive lymphocytes। तो ये lymphocytes मानकर training दिया जाए ସବୁ lymphocyte मन रखो both T lymphocyte और B lymphocyte कोड synthesize हुअନ୍ତି bone marrow। important point एटा मन रखिबो T lymphocyte और B lymphocyte ଦି जन जाको कोड production हुअନ୍ତି B bone marrow। but B lymphocyte माने जो immature जो हमरो lymphocyte माने both B lymphocyte और T lymphocyte जो immature lymphocyte सेमानकर production bone marrow रहे, but immature B lymphocyte माने differentiate करନ୍ତି bone marrow रे, but T lymphocyte माने जो immature T lymphocyte माने सेमाने mature करନ୍ତି thymus रे, सेतमे सेमानकर T दिया जाए thymus रो T lymphocyte, bone marrow पे B lymphocyte। ओके, तो ସେଥିପାଇଁ bone marrow और thymus को primary lymphoid organs कहे, सेठी immature lymphocytes माने differentiate करिकी antigen sensitive lymphocytes रे convert होंदी। सेही lymphocyte जो माने antigen sensitive अछनी, जो माने antigen को identify करिकी समान against attack करिबे। Now after maturation the lymphocytes migrate to secondary lymphoid organs like spleen, lymph nodes, tonsils, spare patches of small intestine and appendix। ଏବେ ଯେତେବେଳେ maturation ହେଇଗଲା T lymphocytes माने thymus रे mature करिगले और B lymphocytes bone marrow रे mature करिगले। एई matured B और T lymphocytes माने कौन करिवे? माइग्रेट करिवे secondary lymphoid organs को, सेठे जाई की स्टोर ही करे ताकि
ସବୁ ସେକେंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जब से स्टोर होकर रहिबे तो आख पाखरे जोटे भी इन्फेक्शन होला से नियरेस्ट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन रु से ऑब्वियसली से साइट ऑफ इन्फेक्शन को जाई परिबे जल्दी। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन स्प्लीन गोटे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन लिम्फ नोड्स माने हमर जो अछंदी मल्टीपल बहुत सारा लिम्फ नोड्स अछन हम बॉडी रे सब होचन सेकेंडरी लिम्फोइड हमर जो टॉन्सिल्स अछि अराउंड द नेक अराउंड द pharynx सेटा भी हमरो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन रे जो पेयर्स पैचेस अछि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हमर जो अपेंडिक्स अछि सेटा भी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। The secondary lymphoid organs provide sites for interaction of lymphocytes with the antigen, which then proliferate to become effector cells. The secondary lymphoid organs कौन तांकर function primary lymphoid organ ର function होची जोटे origin maturation और proliferation हुए secondary lymphoid organs रे कौन हुए lymphocytes माने आसी कि सेटा store हेथिबे ओके समान माइग्रेट करी सेटा जे store हेबे सेटा कौन हो सेटा होची site of interaction of lymphocytes with the secondary lymphoid organ गोटे साइट प्रोवाइड करे जो साइट रे lymphocytes माने एंटीजन सहित इंटरैक्ट करंती which then proliferate to become effector cells। आ जते बेले lymphocytes मानकर इंटरैक्शन हुए जते बेले lymphocytes मानकर इंटरैक्शन हुए एंटीजन सहित समाने कन्वर्ट हेबे इफेक्टर सेल्स रे ओके इफेक्टर सेल्स माने इम्यून सिस्टम रे इफेक्ट गुडी को प्रोड्यूस करे। lymph nodes thymus lymphatic vessels is our diagrammatic representation होला। The bone marrow is the main lymphoid organ where all the blood cells including lymphocytes are produced। मन रखो प्राइमरी lymphoid organ होचंदी bone marrow और thymus but primary lymphoid organ भितर भी main lymphoid organ कोडा main lymphoid organ तो एटा गोटे very important MCQ मन रखो very important MCQ गोटे छोटो वर्ड रे जिंसर मीनिंग बा आंसर चेंज हे पाए से एमसीक्यू जदी पचारिबो which of the following is a primary lymphoid organ आंसर हमो bone marrow and thymus but से जदी पचारिबो which of the following is a main lymphoid organ मन रखो आंसर हमो bone marrow सेटे सब lymphocytes माने including all the blood cells not only lymphocytes production में thymus is a lobed organ thymus obviously गोटे lobed organ तार lobes अछि right lobe left lobe से बड़े lobe अछि thymus रो located near the heart obviously से heart near रे और beneath the breastbone or beneath the sternum तो beneath the sternum और heart near the heart गोटे ग्लैंड प्रेजेंट थाए सेटा होछि हमर thymus gland okay। Thymus is quite large at the time of birth but keeps reducing in size with age and at the time of puberty it reduced to a very small size। तो मन रखो thymus रो एटा नेचुरल प्रॉपर्टी होछि thymus रो गोटे नेचुरल प्रॉपर्टी होछि एट्रोफी हला thymus रो गोटे नेचुरल प्रॉपर्टी होछि एट्रोफी thymus रो एट्रोफी होछि गोटे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जते बेले बर्थ रो टाइम हला एट द टाइम ऑफ बर्थ thymus रो साइज बहुत अधिक था एट द टाइम ऑफ बर्थ thymus रो साइज बहुत अधिक था बट एज जेमती जेमती बढ़ी बढ़ी जाए thymus कौन हम धीरे धीरे तार साइज कमी कमी आसीबो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी thymus टा गोटे बहुत ही स्मॉल साइज रे रिड्यूस हे जिवो बोथ बोन मेरो हला तो मन रखो thymus टा बहुत ही स्मॉल साइज रे रिड्यूस हे जिवो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एटा वन ऑफ द रीजंस काहे कि छोट पिला मानकर इम्यूनिटी इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर्ड टू elderly people because elderly people मानकर thymus almost degenerate हे गलानी आ thymus रे ही हमर T lymphocytes मानक मैच्योरेशन होतला तो मोर न्यू नंबर ऑफ टी lymphocytes हमर मैच्योर हो नाहंती elderly people मानकर इम्यूनिटी सेति पई वीक थाए ओके बिकॉज़ thymus along with age reducing in size है कि ऑलमोस्ट प्यूबर्टी टाइम रे गोटे बहुत छोटो साइज रे आसे जोटा को एट्रोफी कहवा जाय। Both bone marrow and thymus provide the microenvironment for development and maturation of T lymphocytes। Obviously, bone marrow और thymus दी जन जाको microenvironment provide करंती है। एटा गोटे very important MCQ microenvironment ना macroenvironment एटा भी नीट रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे आसीची which of the following statement is true लेखा हेथिबो एटा से माइक्रो टा मैक्रो कर देथिबो पिला माने भल से पढिबेनी और एटा को ट्रू मार देबे। तो देखो एटा भल से पढो कि thymus कोन करे both bone marrow और thymus माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करंती है मन रखो माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करंती फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टी lymphocytes and B lymphocyte। स्प्लीन इज अ लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन हला स्प्लीन गोटे लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन और सेतरे lymphocytes और phagocytes माने था lymphocytes मानक सहित कोन थाए स्प्लीन ऑब्वियसली सेकेंडरी lymphoid organ तो lymphocytes माने रहिबे और ता सहित phagocytes माने थिबे जो माने सेटा जहां भी माइक्रोब जेबो सेटा को phagocytosis करबे। स्प्लीन गोटे ब्लड रो फिल्टर भले एक्ट होला रिमेंबर स्प्लीन एक्ट्स एज अ फिल्टर ऑफ द ब्लड बाय ट्रैपिंग द ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने ब्लड रे सर्कुलेट करथबे बा ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म
जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने ब्लड रे सर्कुलेट करथबे ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म समान सही माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଟର ଭଳିଆ ଆକ୍ଟ କରେ ସ୍ପ୍ଲିନ୍ ଯୋଉଟା ବ୍ଲଡ କୁ ଫିଲ୍ଟର କରିକି ସେଇ ବ୍ଲଡ ବୋର୍ନ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାପ୍ କରିଦିଏ ସ୍ପ୍ଲିନ୍ ଅଲସୋ ଆକ୍ଟ୍ସ ଏଜ ଏ ଲାର୍ଜ ରିଜର୍ଭର ଅଫ ଏରିଥ୍ରୋସାଇଟ୍ସ ଅବଭିୟସଲି ସବୁ ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ ସେଲ୍ ମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଭୟାର୍ଡ କୁହାଯାଏ ସ୍ପ୍ଲିନ୍ କୁ ଗ୍ରେଭୟାର୍ଡ ଅଫ ଆରବିସିସ୍ କୁହାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଅବଭିୟସଲି ସେଠି ସବୁ ଆରବିସିସ୍ ମାନେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ସ୍ପ୍ଲିନ୍ ରେ ଆଉ ସ୍ପ୍ଲିନ୍ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ ର ଫିଲ୍ଟର ଭଳିଆ ବି ଆକ୍ଟ କରେ ଯାହା ବି ବ୍ଲଡ ବୋର୍ନ ଅର୍ଗାନିଜମ ମାନେ सर्कुलेट करथिबे ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଟ୍ରାପ୍ କରିଦିଏ lymph nodes are the small solid structures located at different points along the lymphatic system ର ଅନେକ ଅନେକ ପଏଣ୍ଟ ରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ solid structure ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ lymph node କୁହାଯାଏ ସେମାନେ different points ରେ present ଅଛନ୍ତି lymph nodes serve to trap the microorganisms or other antigens ତ ମନେ ରଖ lymph nodes ମାନଙ୍କର କଣ function lymph nodes ମାନେ microorganism ଆଉ other antigens ମାନଙ୍କୁ trap କରିବେ which happen to get into the lymph and the tissue fluid ଯୋଉମାନେ blood କୁ circulate କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପ୍ଲିନ୍ ଟ୍ରାପ୍ କରିବ ବ୍ଲଡ ବୋର୍ନ ଅର୍ଗାନିଜମ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ lymph ଆଉ tissue fluid ରେ enter କରିଯିବେ ହେଲା ଦେଖ ମାଇକ୍ରୋ ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ ବା ଆଣ୍ଟିଜେନ ମାନେ lymph ଆଉ tissue fluid ଭିତରେ enter କରି ଯାଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ lymph nodes ମାନେ ଟ୍ରାପ୍ କରିବେ antigens which are trapped in the lymph nodes are responsible for activation of lymphocytes present there and cause the immune response obviously एटा भी हुआ कि जो एंटीजन माने lymph nodes से ट्रैप ହେଇକି ଥିବେ ସେମାନେ ସେଇଠି ପ୍ରେଜେंट ଥିବା lymphocytes ମାନଙ୍କୁ एक्टिवेट करेकरी immune response को augment करेबे obviously secondary lymphoid organ ମାନଙ୍କର function is ସେମାନେ ସାଇଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବେ ଯୋଉଟା lymphocytes ମାନେ एंटीजन ମାନଙ୍କ ସହିତ interaction କରିବେ ଆଉ ଏଇ interaction ଯୋଗୁ lymphocytes ମାନଙ୍କର activation ହବ immune response ଦେଖାଯିବ there is also a lymphoid tissue located within the lining of the major tracts major ଆମର जो tract गुड़िक अछि जेमति कि respiratory tract digestive tract और urogenital tract सेही respiratory digestive हमें starting रे innate immunity भी तमु जने मन थिबा पढिथिले कि respiratory tract digestive gastrointestinal tract और urogenital tract रो जो epithelial lining अछि सेटे mucus secreting cells माने थाते सेही mucus lining भी बहुत microbes को trap करे तो सेही mucus lining जो microbes माने ट्रैप करके रखिथिबो सेहीठे भी हमरो lymphoid tissue present अछि important MCQ lymphoid tissue हमरो major tracts मानकर lining along रे भी present अछि respiratory digestive और urogenital tracts में lining सेटा को कहै छै mucosa associated lymphoid tissue MALT very important MCQ बारंबार क्वेश्चन आसी परिबो एटा प्रीवियस क्वेश्चन आसी जेबी mucosa associated lymphoid tissue कोन mucosa associated lymphoid tissue अछि जोटा हमरो epithelial mucosa epithelium तो जो मेजर ट्रैक्ट जो म्यूकोसल एपिथेलियम अछि सेही लाइनिंग रे प्रेजेंट है सेठी जो म्यूकोसा के म्यूकस सिक्रेशन रे जो एंटीजेन्स में ट्रैप हेगी थिबे माइक्रोब्स में ट्रैप हेगी थिबे सेठी जो लिम्फोसाइट्स अछन समान सहित react करके immune reaction produce करबे now it constitutes about 50% of the lymphoid tissue of the human body एटा भी गोटे very important MCQ कि हमर जो एटा भी गोटे very important MCQ कि जो म्यूकोसा एसोसिएटेड lymphoid tissue वा माल्ट अछि सेटा हम बॉडी रे केते परसेंट ऑफ lymphoid tissue constitute करे मतलब को 50% lymphoid tissue हमर 50% हमरा म्यूकोसा एसोसिएटेड lymphoid tissue नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करिबा एड्स बा एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम हला मन रखा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स एड्स का फुल फॉर्म होची एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम मु तुम कहै छी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम काहे कि कहला व्हाट इज अ सिंड्रोम सिंड्रोम रो अर्थ कोन सिंड्रोम रो अर्थ होची ऑफ सिम्पटम्स ग्रुप ऑफ डिजीजेस एड्स इज नॉट अ सिंगल डिजीज हला एड्स गोटे सिंगल डिजीज नहीं एड्स होची गोटे ग्रुप ऑफ डिजीज बा ग्रुप ऑफ सिम्पटम एड्स रो फुल फॉर्म होची एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम और सी गोटे ग्रुप ऑफ सिम्पटम्स बा ग्रुप ऑफ डिजीज दिस मींस दैट deficiency of immune system acquired this means deficiency of immune system acquired during the lifetime of individual indicating it is not a congenital disease बारंबार कोची आर अर्थ कोन acquired immunodeficiency syndrome तीनटा पार्ट अछि एटा गोटे अछि एक्वायर्ड गोटे अछि इम्यूनोडेफिशिएंसी गोटे अछि सिंड्रोम एक्वायर्ड माने एटा कंजेनिटल नो इट इज नॉट अ कंजेनिटल डिजीज एटा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल से ए डिजीज टाइप को एक्वायर करते ओके this is acquired during the lifetime of the individual it is not a congenital disease very important point barambar बोलते it is not a congenital disease it is not a congenital disease okay it is acquired during the lifetime it is not a congenital disease so acquired
अर्थ होची कंजेनिटल नहीं, एटा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द इंडिविजुअल से एक्वायर करे। तापर होची इम्यूनो डेफिशिएंसी माने इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ द इम्यून सिस्टम जोथरे हमर इम्यून सिस्टम रो डेफिशिएंसी हुए, इम्यून सिस्टम हमर वीक हे जाए बा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हे जाए। ओके, इधर हम इम्यून सिस्टम वीक है जाए ना कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए। थर्ड होची सिंड्रोम। सिंड्रोम रो अर्थ कोन? सिंड्रोम मींस ए ग्रुप ऑफ सिम्पटम्स और ए ग्रुप ऑफ डिजीज। सिंड्रोम आपको एथि में कहला बिकॉज़ एटा गोटे सिंगल डिजीज नय, एटा हम इम्यून सिस्टम को डैमेज करला। तो जो भी छोटो रो छोटो इन्फेक्शन बा डिजीज हबो सेटा भी बहुत खतरनाक मैनिफेस्टेशन शो करिवो। तो एटा गोटे सिंगल डिजीज रे मनुष्य मरिवो, मल्टीपल डिजीज रो इन्फेक्शन जो और से डिजीज पर तो क्योर भी हमारे बिकॉज़ हमारा इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाए। तो जो भी डिजीज हबो सेटा बहुत डेंजरस मैनिफेस्टेशन शो करिवो। फाइनली डेथ इज इनएविटेबल। एक केस आज जाए एड्स रो कौन से ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं, जहां एड्स हला डेथ इज कंपलसरी। सिंड्रोम एथि पई कहला बिकॉज़ एथरे बहुत सारा सिम्पटम देखिबा को मिले और किछि स्पेसिफिक जो भी डिजीज हबो अकॉर्डिंगली सही सिम्पटम हो, बिकॉज़ ये जस्ट हमर इम्यून सिस्टम को वीक कर देबो। एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981। फर्स्ट रे एड्स कोड देखा जायतिला 1981 रे फर्स्ट टाइम पे एड्स देखा जायतिला और इन द लास्ट 25 इयर्स इट हैज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड किलिंग मोर देन 25 मिलियन पीपल। मन रखो फर्स्ट टाइम पे एड्स देखा जायतिला 19 पे नेक्स्ट लास्ट 25 इयर्स भीतर एड्स जो अछि से ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड कर सरलानी और ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड करिके अराउंड 25 मिलियन लोक मानकर जीवन नै सरलानी ए डेंजरस डिजीज। एड्स एड्स किए कॉज करे? एड्स कॉज करे गोटे वायरस जाको जार नाम अछि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस बा एचआईवी वायरस होची से गोटे ग्रुप ऑफ वायरस को बिलोंग करे। इट इज अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड रेट्रो वायरस। ओके, रेट्रो वायरस गोटे ग्रुप ऑफ वायरस है, तारो सेही ग्रुप रो गोटे मेंबर होची एचआईवी बा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स कॉज करे एचआईवी वायरस और सी गोटे एग्जांपल ऑफ रेट्रो वायरस। रेट्रोवायरस मानकर गोटे स्पेशल फीचर थाए, सेमानकर गोटे एनवेलप थाए हला। मन रखो रेट्रोवायरसेस मानकर गोटे स्पेशल फीचर थाए, दे हैव एन एनवेलप एनक्लोजिंग द आरएनए जीनोम। सेमानकर जीनोम कोन? फर्स्ट एमसीक्यू एटा गोटे फर्स्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू असला रेट्रोवायरसेस मानकर जीनोम कोन? सेमानकर जीनोम डीएनए ना सेमानकर जीनोम आरएनए? सेमाने डीएनए कंटेनिंग वायरस ना आरएनए कंटेनिंग वायरस? आंसर इज रेट्रोवायरसेस हैव ए आरएनए जीनोम। आउ गोटे स्पेशल फीचर होची सेमानकर गोटे प्रोटीन एनवेलप थाए जे कवर करे सही आरएनए जीनोम को हला। आरएनए जीनोम को एनक्लोज करबा पय सेमानकर गोटे प्रोटीन शीट बा प्रोटीन एनवेलप भलिया थाए। ओके, तो फर्स्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू रेट्रोवायरसेस मानकर आरएनए जीनोम थाए और सेमानकर गोटे एनवेलप थाए आरएनए जीनोम को एनक्लोज करी रखबा पय। ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन जनरली ऑकर्स बाय सेक्सुअल कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। एचआईवी इन्फेक्शन ट्रांसमिट केमिति हुए? मन रखो एचआईवी इन्फेक्शन हमर बॉडी फ्लूइड्स थ्रू रे ट्रांसमिट हबो। वेरी वेरी इंपोर्टेंट एमसीक्यू। एचआईवी इन्फेक्शन बॉडी फ्लूइड्स थ्रू रे ट्रांसमिट हबो। सेक्सुअल कांटेक्ट जदि हमें करबा इन्फेक्टेड पर्सन से, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट जदि कंडोम यूज करा जाए तो सही केस रे एड्स को प्रिवेंट करा हे परिबो, बिकॉज़ कंडोम हमरो माने सेक्सुअल फ्लूइड्स जो আছে से सेक्सुअल फ्लूइड्स रो कांटेक्ट को प्रिवेंट करे। तो इन एडिशन टू कॉन्ट्रासेप्शन से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट करे कंडोम्स बा वो भी बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। आउ केमिति हे परिबो? ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। जदि कंटामिनेटेड ब्लड बा ब्लड प्रोडक्ट्स जदि ट्रांसफ्यूजन हला तो सही द्वारा भी एड्स हे परिबो, बिकॉज़ इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स रे हमरा ब्लड भी आसे, सेक्सुअल फ्लूइड्स आसे, शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स। जो लोक माने ड्रग अब्यूज करंती इंट्रावेनसली माने जो माने इंजेक्शन थ्रू रे डायरेक्ट वेन रे ड्रग गुडी को इंजेक्ट करिकी ड्रग रो अब्यूज करती। जो माने ड्रग रो अब्यूज करती बाय डायरेक्टली से ड्रग को वेन रे इंजेक्ट करिके, वेन रे इंजेक्ट करले माने अगेन ब्लड रो कांटेक्ट आसला, से नीडल जदी ऑलरेडी के गोटे इन्फेक्टेड एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन यूज करची तो से नीडल इन्फेक्टेड हला, तो से नीडल को जदी गोटे हेल्दी पर्सन निजे वेन को भी इन्फेक्शन हे परिबो। तो सेक्सुअल कांटेक्ट अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट द्वारा हे परिबो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ कांटेक्टेड ब्लड द्वारा हे परिबो। आउ केमिति हे परिबो? जदि इन्फेक्टेड नीडल contamination infected needle contact traceable in case of intravenous drug abuse. How can be from infected mother to her child through the placenta through रे भी disease आसी परिबो। मन रखो जदि गोटे मदर को एचआईवी इन्फेक्शन हेछि तो ता चाइल्ड को एचआईवी इन्फेक्शन हेबा कंपलसरी। चाइल्ड कोनोसी
रास्ता रे बंची पारिबो नाही ओके जदी एचआईवी इन्फेक्टेड मदर अछि तो ता पिला को एचआईवी इन्फेक्शन हबाटा कंपलसरी बंचीबार कोनोसी रास्ता नहीं इट इज सच ए डेंजरस डिजीज it is not a disease it is a syndrome it is such a dangerous syndrome जदि इन्फेक्टेड मदर हेची ओके जदि मदर इन्फेक्टेड अछि एचआईवी रे तो प्लेसेंटा थ्रू रे से एचआईवी वायरस फीटल को भी इन्फेक्ट कर दबो सो पीपल हु आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन तो को लोक माने हाई रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन इंपोर्टेंट एमसीक्यू को ग्रुप ऑफ पीपल आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग एचआईवी इन्फेक्शन को ग्रुप ऑफ पीपल आंसर होची इंडिविजुअल्स हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स जो इंडिविजुअल मानकर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स थांती ओके बहुत लोगों सेक्स माने सेक्सुअल इंटरकोर्स करंती से माने एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग एचआईवी जो माने ड्रग एडिक्ट्स थांती जो माने इंट्रावेनस ड्रग रो अब्यूज करंती ड्रग एडिक्ट्स माने जो माने ड्रग अब्यूज इंट्रावेनसली करंती डायरेक्ट वेन इंजेक्शन नहीं की individuals who require repeated blood transfusion से individuals माने जो माने को repeated blood transfusion दरकार पड़े ଯେମିତି କି ସପୋଜ କର କାହାକୁ ଥ୍ୟାଲାସେମିଆ ଅଛି ବା ସିକଲ ସେଲ ଏନିମିଆ ଅଛି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ରିପିଟେଡଲି ବ୍ଲଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ ରାଇଟ୍ ଥ୍ୟାଲାସେମିଆ ଆଉ ସିକଲ ସେଲ ଏନିମିଆ ଯୋଉ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାରଲି ରିପିଟେଡଲି ବ୍ଲଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ କରିବାକୁ ପଡେ ତ ଯଦି ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ଭଲସେ ଠିକ ଠାକ ରେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ରଖାଯାଏନି କୌଣସି ଗୋଟେ ଏଚଆଇଭି ଇନଫେକ୍ଟେଡ ପେସେଣ୍ଟ ର ବ୍ଲଡ ସେଇଠି ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖାଯାଇଛି ତ ସେମାନେ इनफैक्ट से ब्लड थ्रू रे इन्फेक्शन स्प्रेड हो पारे तो जो लोक मान को रिपीटेडली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने पड़े से भी एट ए हाई रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एड्स थांती ओके तो को माने हाई रिस्क रे थांती फर्स्ट होची जो मानकर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स थांती जो माने इंट्रावेनस ड्रग रो अब्यूज करंती ड्रग एडिक्ट्स माने जो लोक मान को रिपीटेडली आउ रेगुलरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने को पड़े फॉर एग्जांपल जो मान को सिकल सेल एनीमिया बा थैलेसेमिया वाली डिजीज थाए आउ चिल्ड्रन बोर्न टू एचआईवी इन्फेक्टेड मदर चिल्ड्रन बोर्न टू एचआईवी इन्फेक्टेड मदर जदि मदर को एचआईवी इन्फेक्शन हेची तो तार छोट पिला जे बोर्न हेची ताको भी एचआईवी इन्फेक्शन हबार चांस वेरी वेरी हाई ओके वेरी हाई बिकॉज प्लेसेंटा थ्रू रे इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाए Do you know when do people need repeated blood transfusion? Yes, people need repeated blood transfusion in case of diseases like sickle cell anemia, thalassemia. Okay. तो ये क्वेश्चन रे आंसर कर देले पीपल केते बळे लोक मानन को रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन दरकार पड़िबो फॉर एग्जांपल जेतोल सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया वाली डिजीज हेथिबो Now it is important to note that HIV is not spread by mere touch or physical contact. Important point HIV mere touch or physical contact द्वारा spread हेबो नाही बुझा पड़ला it is an important point कि HIV and AIDS is not spread by mere touch or physical contact okay mere touch or physical contact is spread only it spreads only through the body fluids it is spread only through infected body fluids okay जदि से पर्सन जदि इन्फेक्टेड पर्सन को जदि कौन पर्सन को इन्फेक्ट अच्छी इन्फेक्शन अच्छी तो तार बॉडी फ्लूइड होची इन्फेक्शियस तो तार बॉडी फ्लूइड जदि हमर बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट रे आसिला तो सेते बेले इन्फेक्शन स्प्रेड हबो राइट सिंपली इन्फेक्टेड पर्सन को टच करिले बा ता सहित कांटेक्ट करिले फिजिकल कांटेक्ट करिले ई डिजीज स्प्रेड हबो नाही इट स्प्रेड्स ओनली थ्रू infected body fluids. Now, it is hence imperative for physical and psychological well-being that HIV or AIDS infected persons are not isolated from the family and society. तो गोटे स्टिग्मा है जाए जो मानन को एड्स इन्फेक्शन थाए समानकर गोटे जनरल सोसाइटी गोटे स्टिग्मा थाए कि जो एड्स पेशेंट मान थाते समान को बहुत अधिक डिस्क्रिमिनेट करंती बिकॉज़ लोक माने एते एजुकेटेड न थांदे जो मान मेनली अनएजुकेटेड थांदी समान को लागे कि समा इन्फेक्टेड लोक मानकर पाखो को गले जेमिति कॉमन कोल्ड बा फीवर कॉमन कोल्ड बा न्यूमोनिया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन द्वारा स्प्रेड है ना तो समान को लागे कि इन्फेक्टेड पर्सन रो जदी हमें नियर बाय भी रहबा तो हमको से इन्फेक्शन स्प्रेड हो पाए तो से समान गोटे स्टिग्मा रह जाए और जनरली विलेजेस रे एड्स इन्फेक्टेड लोक मानन को जनरली आइसोलेट कर दिया जाए आइसोलेट कर दिया जाए तो सही जिनसटा हबगु हबनी लोक मानन को जो पेशेंट अच्छी से पेशेंट रो फिजिकल वेलबींग और साइकोलॉजिकल वेलबींग ओके फिजिकल और साइकोलॉजिकल वेलबींग पई ए जिनसटा लोक मानन को अवेयर करबा इंपोर्टेंट कि एचआईवी और एड्स जो अच्छी सेटा टच और फिजिकल कांटेक्ट स्प्रेड होनी ओनली बॉडी फ्लूइड्स द्वारा स्प्रेड होची सेति पई एड्स पेशेंट मानन को दया करी फैमिली और सोसाइटी को आइसोलेट करंतुनी समान को भी एज अ ह्यूमन ही ट्रीट करंतु
there is always a time lag between the infection and appearance of AIDS symptoms. एटा गोटे important point. ଯେତେବେଳେ AIDS ର infection ହୁଏ ମାନେ HIV virus ଯେତେବେଳେ body ରେ enter କରେ ବା infection ହୁଏ ସେଇ point of time ଆଉ appearance of AIDS symptoms କେତେବେଳେ AIDS ର symptom ଗୁଡିକ ଦେଖାଯିବ ସେଇ ଦିଟା ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ time lag ଥାଏ ମନେ ରଖ infection ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ମାନେ HIV virus ଯେତେବେଳେ ଆମ body ରେ enter କରିଲା ସେଇ point ଆଉ ଯେତେବେଳେ AIDS ର symptom appear କରିବ ସେଇ ଦିଟା event ମଝିରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ time lag ଥାଏ ଆଉ ଏଇ time lag ଟାକୁ incubation period କୁହାଯାଏ ଏଇ time lag ଟାକୁ incubation period କୁହାଯାଏ ହେଲା this period may vary from few months to many years usually 5 to 10 years AIDS जो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम अच्छी से गोटे बहुत डेंजरस कंडीशन प्लस से डेंजरस कंडीशन को आउरी अनप्रेडिक्टेबल करे दिए तार अनप्रेडिक्टेबल इंक्यूबेशन पीरियड बिकॉज किछि लोकंकरे आज जदि इन्फेक्शन हला विद इन फ्यू वीक्स समानकर सिम्पटम्स देखा जो आउ किछि लोकंकर आज जदि इन्फेक्शन हला 5 वर्ष रु 10 वर्ष पर्यंत 5-10 वर्ष बीती गले मध्य इन्फेक्शन रो जो सिम्पटम अछि सेटा देखा जीवन तो सही कैरेक्टरिस्टिक ता ए डिजीज को आउरी डेंजरस करे दिए तो सपोज करो आज गोटे लोक को इन्फेक्शन हे गला बट ताको जाना नहीं सेटा डिटेक्ट हे परिबानी सेतल जाय जेतल जाय गोटे इनफ नंबर ऑफ एंटीबॉडीज बॉडी रे आसी जाउनी कि से वायरल लोड ता बॉडी रे एते सबसे गोटे मिनिमम थ्रेशोल्ड है इंक्रीज करम जेतल जाय डिटेक्शन इज पॉसिबल सेति में अर्ली डिटेक्शन पई किछि प्रोसीजर्स हैं जेमे कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आरटीपीसीआर रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बा एलआईसी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट एसे ए सब जो अछि ए सब अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज पई यूज हुए बिकॉज अर्ली डिटेक्शन करले ताको हमें जल्दी जाना बिकॉज नॉर्मल जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स थाए ना से प्रोसीजर का जाना पड़िबो नहीं सपोज आज गोटे पर्सन इन्फेक्टेड हला और तार 5 to 10 इयर्स के लागि पारे सिम्पटम्स देखा जाय तो ताको जाना ही पड़िबो से लागि से एब्सोल्युटली नॉर्मल अछि ताको कोन से डिजीज है से मानकर गला ब्लड डोनेट करिया पे और से ठीक ठाक से भल से टेस्टिंग करि ना नहीं गले से ब्लड अभी इन्फेक्टेड ब्लड बट कहा को जाना नहीं बिकॉज सिम्पटम्स तो देखा जाए तो से लोक को भी जाना नहीं से ब्लड डोनेट करि पारे कौन सी अदर पर्सन से अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर पारे तो से जहां से तो सेक्सुअल इंटरकोर्स करिवो ताको भी इन्फेक्शन स्प्रेड ही बुझा पड़ला ना तो ये जो अनप्रेडिक्टेबल इंक्यूबेशन पीरियड अच्छी जोटा फ्यू वीक्स टू इनफैक्ट फ्यू इयर्स बा 5 to 10 इयर्स पर्यंत रही पारे वेरी करे ए अनप्रेडिक्टेबल इंक्यूबेशन पीरियड टा डिजीज को आउरी डेंजरस कर दिए बिकॉज डिटेक्ट ही हबनी गोटे पर्सन जदि आज इन्फेक्ट भेला ताको जाना भी पड़िबनी इट मे टेक 5 to 10 इयर्स और सेति के भीतर से आउरी मोर देन हंड्रेड्स ऑफ पीपल को इन्फेक्शन स्प्रेड करि दे पारे राइट तो एई डिजीज रो पैथोफिजियोलॉजी हमें नेक्स्ट सेशन रे पढ़िबा केमिति ए डिजीज स्प्रेड होची केमिति ए वायरस हम बॉडी रे मल्टीप्लाई करची कोन कोन मेकानिज्म यूज करची से वायरस केमिति गोटे सेल रो आउटे सेल को स्प्रेड होची आ इम्यून सिस्टम को भलिया वीक होची एमिति कोन करची से वायरस कि हमर इम्यून सिस्टम वीक हो जाची और इम्यून सिस्टम वीक हो जाको केमिति अदर इन्फेक्शंस माने आसुचंदी सेटा देखिबा ता सहित प्रिवेंशन ऑफ एड्स विषय रे जानिबा एड्स को हम केमिति प्रिवेंट करबा बिकॉज़ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जेहेतु ए डिजीज रो कुछ क्योर नाही ओके एड्स इज अ डिजीज एड्स इज अ सिंड्रोम जार क्योर नाही आज जाय कोन से क्योर नहीं तो प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर फॉर दिस डिजीज ओके prevention is the only cure it is the साफ साफ लिखा है as AIDS says no cure prevention is the best option okay prevention is the best option और जति में लोक मानको अवेयरनेस स्प्रेड करबा बहुत इंपोर्टेंट बिकॉज़ ए डिजीज टा एमिति डिजीज की जनरली अनएजुकेटेड लोक माने ही एटा को अधिक स्प्रेड करंती तो एड्स रो जेतु क्योर नहीं प्रिवेंशन होची हमर बेस्ट ऑप्शन तो से विषय रे पढिबा कोन कोन प्रिवेंटिव मेजर्स ने करबा तापर हम पढिबा सपोर्ट टू डेडली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज विषय रे जोटा होची कैंसर कैंसर इज द वन ऑफ द मोस्ट dreaded diseases of human beings and a major cause of death all over the globe हला कैंसर होची वन ऑफ द मोस्ट dreaded diseases of human beings one of the most dreaded diseases of human beings और major cause of death all over the globe कैंसर विषय रे पढिबा कैंसर रो पैथोफिजियोलॉजी डिटेक्शन डायग्नोसिस और केमिति ट्रीटमेंट करा जाय कैंसर रो तापर ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज बुझिबा किछि ड्रग्स विषय रे पढिबा अब्यूज विषय रे पढिबा एडोलेसेंस रे केमिति ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज रो इंसिडेंस बढ़ी जाय तापर सेही अधिका जदी एक्सेस यूज करे तो एडिक्शन डिपेंडेंस केमिति हे जाय और
विड्रॉल करले केमती विड्रॉल सिम्पटम्स आगे देखा जाए आउ ड्रग अल्कोहल एब्यूज रो केमती कोन एडवर्स इफेक्ट्स अछि हम बॉडी ऊपर और सेटा केमती प्रिवेंट करे परिबो से सब देखिबा राइट नेक्स्ट सब्सिक्वेंट सेशन से तो आशा करछि आज मु जहा तुमको पढ़ेली सेटा तुमको भल से बुझा पड़ला तो नेक्स्ट क्लास में मिलवा थैंक यू।